Like Horney and some other neo-Freudian, Adler also emphasized the important role of social factor. इनमें हमें पूर्व कॉन्सेप्ट रे पढ़ले कौन Karen Horney सी भी सोशल फैक्टर को इम्पोर्टेंस देले फॉर द पर्सनालिटी डेवलपमेंट तो सेम वही अल्फ्रेड अडलर सी मते एम्फसाइज करे सोशल फैक्टर जो कि ह्यूमन पर्सनालिटी को चेंजेस करे so in the formation of development of personality his point of disagreement with the Freud is not much as such but his views are somewhat different with regard to certain issues. He was the founder of the School of Individual Psychology. He emphasized the fact that childhood experiences are very important in shaping personality, but sexual urge is not most dominant driving force energy in human life. तो प्रथम हूँ गोटे लोकर पर्सनालिटी डेभलप करा चाइल्डहुड रू डेभलपमेंट कर बुझ जो शिखा जाए मैंने पेरेंट्स को केमती सम्मान दब टीचर को केमती सम्मान दब सोशियली केमती आम रहा तो सहीटा से ही आम पर्सनालिटी डेभलपमेंट हो बुझेगा what is most important is the self-assertive or mastery motive. He wanted to clarify the point that for a variety of reasons, children develop a sense of inferiority complex, especially when they compare themselves with their parents, teacher, and other elder members who are capable of showing dominance over others. He thus viewed that personality development is very much related to our effort to overcome such type of complex. Inferiority complex होची कोन जेता देखिबे गोटे पिला जेता बेले से जज करे प्रथमे काहा को जज करिवो त पेरेंट्स को छेड़ बसी जाय लाली ये लैपटॉप टा काढून से पछो पछो की वस्तु बसी गलो ने आगु से सोई पड़िबो जे पड़े मु तो देखियो दरकार न देखो प्रथम हूँ जो छोट छुआटे घरे रुहे से पेरेंट टीचर ए मान को सब देखे हेलो सर कहीं 10टा रखले हम आगे 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 सर 10टा रख दो सर आगे नहीं एक्चुअली 8टा रु 10टा कोन क्लास रखी अल्टरनेटिव और सोशियोलॉजी अछि तो आगे जानते 8टा रु 10टा एक्चुअली क्लास है मैं गोटे अल्टरनेटिव है गोटे तापर आपन क्लास करते सर आगे कौन तो दो क्वेश्चन दो और डिस्टर्ब करिबन मजे तो छोट छुआ कौन करती घर सब लोक मान अनुकरण करती किए कौ टाइप रो बिहेव करती से बिहेवियर टाक से ऑब्जर्व करती टीचर केमती रिएक्ट करूची बापा माँ केमती रिएक्ट कर तो सी से हिसाब से आरोगेंट हुए नले माने आराम से कथा हुए बुझेला तो गोटे पिलार डेवलपमेंट फैमिली बहुत इंपोर्टेंट रोल प्ले कर फैमिली लोक मैंने जब गुड ये कथबार्ता होते भर आध्यात्मिक भावना थी तो अल्टीमेटली कौन हम से छुआटे सेमती थी फैमिली जब सी एग्रेसिव थी मरा कटा करते सी मो दादा मारुति कि बापा मारुति मु भी मारी बुझेगा तो से हिसाब से पिलाटे डेवलपमेंट है it should be goal of directed to purposeful so that it will be provide a sense of security confidence along with the sense of fulfillment. This will definitely help in overcoming the feeling of inferiority complex because he believed that this complex is the primary motive of the human being. तो जेहेतु से जाई न थे
तो सी कौन करे ना सी देखे को समय मु को भया बिहेव करे माने केमते फादर केमते मदर को बिहेव करतबे से बिहेवियर पैटर्न को से फॉलो करे तो से कौन करिवो अल्टीमेटली तक ए लोकटा को तो बाबा एमती कथाटा करजंदे मु भी मां को एमती कथाबार्ता करिवि तो सी सेटा को ही फॉलो करे बुझिला with regard to the dream, his view are different from that of Freud. According to him, dreams represent the dreamer lifestyle. He believed that dreams point out to the immediate future, not to the past as point of the truth. Hence, the effort extended by the individual is very important in achieving success in life. He said that dream is a type of preparation for the future and the purpose of the goal set by the dreamer is very important. ତାପରେ ସେ କଣ କରିବେ ଡ୍ରିମ୍ ଆଉ ଡ୍ରିମର ଭିତରେ କହିଲେ ଯେମିତି ଆମେ କହିବା what is the purpose of your learning ତ ଆମେ କାହିଁକି ପଢୁଛେ you having some kind of aim ତ ମୁଁ ବଡ ହେଲେ ଏଇଆ ହେବି କିମ୍ବା ଏମିତି ରହିବି ତ ଆମେ ସେଇ ପ୍ୟାଟର୍ନ କୁ ଫଲୋ କରୁଛେ ଆଉ ସେ ଡ୍ରିମ୍ କୁ ଆଚିଭ୍ କରିବା ପାଇଁ ତା ପାଇଁ ଯାହା ଯାହା ସବୁ ଜିନିଷ ଦରକାର ଆମେ ପାଠ ପଢୁଛେ କି କହୁଛି ମୁଁ ଆଇଏଏସ୍ ଅଫିସର ହେବି କି କହୁଛି ଡକ୍ଟର ହେବି କି କହୁଛି ଆଇପିଏସ୍ ଅଫିସର ହେବି ତ ତା ପାଇଁ ଯୋଉ ସବୁ ଦରକାର ଯୋଉ ଏଜୁକେଶନାଲ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ ଦରକାର ଯୋଉ ଗ୍ରେଡ ଦରକାର ତ ସେଇଟାକୁ ଅଲ୍ଟିମେଟଲି ଆମେ ଫଲୋ କରୁଛେ ବୁଝିଲା ଓକେ ତ ଏବେ ଲେଖ ତାଙ୍କର ବି ନାହିଁ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଆସିନାହାନ୍ତି ହଁ ଆସିନି ହଁ ମେସେଜ କରିଦେବେ ମାନେ ମେସେଜ କରିଦେବେ ମୁଁ ଖାଲି କହିଦେ ସାର୍ ଆସୁଛନ୍ତି କି what is striving for superiority what is striving for superiority defined by Alfred Adler. Hmm? 3 marks करके दो according to the Alfred Adler striving for superiority is
is the striving to feel superior in order to overcome feelings of inferiority. Inferiority ମାନେ କଣ କଣ ବୁଝିଲି? ମାଇନର ନୁହଁ, ମାନେ ଆମର ଗୋଟେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଫିଲିଂ ଆସିବ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆମେ ଇନସିକ୍ୟୁରିଟି ଫିଲ୍ କରିବା। ଇନସିକ୍ୟୁରିଟି ଫିଲ୍ କରିବା କଣ, ମୁଁ ମେଣ୍ଟାଲିଟିରେ ଆସିବ ମୁଁ ଆ ଭଳି ହେଇପାରିବି, ବୁଝିପାରୁଛି, ସେଇଟାକୁ କୁହାଯିବ କଣ, ଇନଫେରିଟି ବୋଲି କୁହାଯିବ। ବୁଝିପାରୁଛି, ଯୋଉଟା କି କୁହାଯିବ ସିକ୍ୟୁର ଫିଲ୍ ହବନି, ନିଜର ଭିତରେ ବିଲିଭନେସ୍ ଆସିବନି, ତ ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ କୁହାଯିବ କଣ ନା ଇନଫେରିଟି ବୋଲି କୁହାଯିବ। ଇନସିକ୍ୟୁର, ହଁ ହଁ, ମାନେ ଯଦି ମୁଁ କହିବି ମୁଁ ଆଗକୁ ରହୁଛି ତ ମୁଁ ଇନସିକ୍ୟୁର ଫିଲ୍, ହଁ, এটা ସାଇକୋଲୋଜିକାଲ ଟର୍ମ ହଉଛି, ଏଟା ହଉଛି କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଫିଲିଂ ଆସିବ, ଜଣଙ୍କ ପାଇଁ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ଫିଲିଂ ଆସିବ, ମାନେ ଡେଲି ଲାଇଫ ଆଉ ଡେଲି ବିଲିଭ, ଏଟା ଫିଜିକାଲି ଆଉ ମେଣ୍ଟାଲି ଏଟା ଆମେ ରହିବା, ତ ମୁଁ ତା ଭଳି ଦେଖାଯାଉନି, ମେଣ୍ଟାଲି ମୁଁ ଆଭଳି ହେଇପାରିବିନି, ତ ଏଇ ଦିଟା ଉପରେ ଏଟା ଡିପେଣ୍ଡ କରେ, ବୁଝିହଉଛି। ତାପରେ କଣ ଲେଖ, ହି ଏମ୍ଫାସାଇଜ ଦ ଫ୍ୟାକ୍ଟ, he emphasized the fact that childhood experiences are very important in shaping personality, according to him, children develop a develop a develop a sense of, according to him, children develop a sense of inferiority complex. ହଁ ହଁ ଏବେ ଆସିବି।
ଦେଇଛି ମତେ ଦେଇଛି 4100 କଣ ଡାକିଲି କହିଲ? Especially when they compare themselves with their parents. Comma teachers and other elder members he believed that next point he believed that feelings of yearly interaction next one yearly interaction with family. He believed that feelings of inferiority drive individuals to achieve personal goals. Drive individuals to achieve personal goals. তারপর point. Yearly interaction with family members. Yearly interaction with family member. Yearly interaction with family member, comma peers, PERS. Comma sorry and adults helps to determine the role of inferiority and superiority. SUPERIORITY. Superiority in life.
Based on his view, next one, based on his view, all human behavior is goal oriented and motivated by striving for superiority, individuals differ in their goals and how they try to achieve them and how they try to achieve them, how they try to achieve them. Then ଏବେ ଆସିବା ଆ ଉପରେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଯୋଉ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆସିଛି ମୋର ରିକ୍ Rickson, the search for identity. Rickson theory of personality is centered around the concept of social adaptation. Okay, ये विषय रहा social adaptation. According to him, development is a continuous process in life, and each stage of the life brings with it some kind of crisis or problem to the child that are difficult to adapt. तो आमर लाइफ रो डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस दे गोटे चाइल्ड जाए तो प्रत्येक स्टेजेस रे किछि चैलेंजेस दिउ ओके आउ से चैलेंजेस को से फुलफिल करके आगु बढ़े बुझौ जदे एबे तमर चैलेंजेस कोन हो फर्स्ट ऑफ ऑल करियो नेक्स्ट तापर तमर चैलेंजेस कोन आसीओ भलो कॉलेज रे ऑनर्स नै पढिबो ये गोटे चैलेंजेस कॉलेज पढ़सला पर जॉब पई रही तो डिफरेंट स्टेज रे डिफरेंट चैलेंजेस तमे 1 टू 10 तमे रहलो बोर्ड रे केमति वाला तो 9th जाए तमर चलला कोन ना केमति भलो पढिबो बुझियो तो ए सब डिफरेंट चैलेंजेस सब रहते along with it the social and cultural factor are also very important from the point of view forming self identity. He modified the 5 psychosexual stages of Freud to 8 psychosocial stages. अगर psychosexual stages को psychosocial stages से बाहर करते हैं जेमते 1 to 2 years रे रहला young adult 2 to 3 years middle age रहला school age तापरे 1 to 2 years रहला 2 to 3 years school age प्री adolescence adolescence young adult middle age and old तो एमती से 8टा स्टेज से डिफाइन कर बुझेला तो एटा तांकर रहला साइकोसोशियल स्टेजेस रे रहला so he viewed that during the process of the development adolescents develop the identity crisis for many reasons there is a such ambiguity in their mind with regard to various roles and relationships. Parents should train their children from the very beginning to reduce their conflict as well as confusion arising in their mind from time to time. Besides this process of socialization, social interaction should be such that it should be make the process more adaptable and meaningful. तो प्रथम रहिला प्रथम स्टेज रे रहबा एडोलेसेंस पीरियड रे आइडेंटिटी क्राइसिस आइडेंटिटी क्राइसिस केमति हुए ता छोट बळे तांकर कोनोसी आइडेंटिटी न थाए जेतेबळे बडा होंती ताको सोशल सहित केमति इंटरैक्शन करा जीवो से केमति निजको बिहेव करिवे सेरा बापा मा बताबे तो से समय रे हठात ऊपर से माने अडॉप्ट करि परନ୍ତି
ओके तो जो अडप्ट करि परंतनी से समय कोन करंती पेरेंट्स को दूरी जाए ओके तो आमे केमती बिहेव करियो हमर बिहेवियर केमती रहबो टू द सोसाइटी मु टीचर को सहित केमती कथावार्ता करी आगुरु केमती कथावार्ता कहूची एबे केमती कथावार्ता करबी एंड व्हेन आई एम ए ग्रेजुएट देन एट दैट टाइम मु केमती कथावार्ता करी तो ए जिंसटा को देखो माने टीचर मीनिंग ता सेम रहउची बट वे ऑफ इंटरैक्शन इज डिफरेंट छोट बेले सार पिटिकी मी कोदरे पढनु दे गालु से केली बुझिला त एबे से कासे कि नहीं तो एबे कहउची गाली दो ओके तो जते बेले तुमे ग्रेजुएट आडको जीवो सेटा मार्क्स रो भय देखे एब्सेंट रो किछि नै आदरे मार्क कमी जीवो तो सेही डरे तुम पाठ पढिबो जेतल तुमे जॉब को जीवो टाइम रे आसीबा टाइम रे जीवा सिखिबा नुवा जिंस करबा जॉब रो फियरनेस ना टेक्निकल टीचर जो द सेम टीचर रो डेफिनेशन कोन होची स्टेज बाय स्टेज हमर डिफरेंट होची किंतु हमें कोन करूचे जे हमें ताको मैनेज करि परिबा नाही ताले हमें सेठी प्रॉब्लम फेस बुझियो जे जेतबे गोटे तमे देखिथिबो गोटे छोट किड टे जेतबे जाउची प्ले स्कूल जाउची ता सहित टीचर केमति बिहेव करूची खेलुची ता सहित एबे गोटे टीचर तुमसे देखलियो कि गोटे चाल फुटबॉल खेलिया बुझिला खेलना धरिक बुलियो नले गोटे टब्बू साइकिल ने आसीबा तू बस मु देबी पेली ओके सो देखो हम जदि से पिलाटा सेही माइंड को ना से साइकिल ले बोलो तले आपण बोलांदो सो इट इज व्हाट लाइक ये टीचर से करथले कि ये टीचर से करियो किंतु हमें टीचर माइंड रे कोन रही टीचर ये जेटा करी बुझियो तो हमें डिफरेंशिएशन जो हमें जदि न करि परिबा तो सेठी हमर कोन होबो ना गोटे अनहेल्दी एनवायरनमेंट को बस तो एडोलेसेंस पीरियड रे ए प्रॉब्लम ता हम तो हमें टीचर को सडनली जेते क्लास 1 to 5 थी वो गोटे ये थी वो 6 क्लास को जीवो से टीचर गोटे अलगा वे रे बे 10th रे गले अलगा वे रे बे कॉलेज आसीबो टीचर आउट देखिबो से टीचर आउट अलगा वे रे बे ग्रेजुएशन जो से प्रोफेशनल वे रे पढ़ो न पढ़ता कि से आसी गाई देखि ए पढ़नु नहीं करन मारी पापा को कहि दे आस्ते पढ़ियो तो जानि तो पढ़िया पड़ियो न पढ़ने तो बैक लागियो मरियो तू चाकरी कर देबो से से गाई देखि नोटबोर्ड देखि से चल पाइबो बुझी होची जेमती जितेबले आमे बड़ होचे सेतेबले आमे कोन होचे ना इंडिपेंडेंट हे कि जाउचे आमे हमरो रोल्स ता कोन रहिबा दरकार पाठ पढ़ा पई हमरो डेडिकेशन कोन रहिबा दरकार सेटा ऑटोमेटिकली आमे एनालाइज करू अब से अनुसार आमे कोन करूचे निजको बनौचे बुझिला अब सेठी के बाड़ेबे ने कि गाली देबे बाड़े देबो सुसाइड कर डरेबो मु फैन में चढ़ लट बाकी लटकी जा तापर आंसर कि अनुज जगह ही ओके तो सोशलाइजेशन हिसाब रे डिफरेंट रहे और रहला ओवरऑल इंप्रेशन इन द डेप्थ एनालिसिस ऑफ द व्यू ऑफ ऑल in the depth analysis of view of all these, New Freudian gives us the impression that modern psychodynamic uh, theorists have moved quite far the Freud central concept. Due to the lack of scientific validity behind the newly developed concept, many are subjected to the criticism. Many statements and concepts of the Freud are also been severely criticized on the ground of giving more emphasis to the sexual energy and considering it as most important driving force in the human being. But whatever may be the comments of criticism, there is no doubt that this concept practically paved the way for doing more extensive research in the field. The Freudian theory टाको बेसिक क्रिटिसिज्म मिलला कारण से गोटा लोकर पर्सनालिटी सेक्सुअलिज्म पाकू नेकी दे कॉन्फ्लिक्ट जोड़े कहबे एम्बिग्यूटी माने जदि सेम माने रूल ता तांका पाखर थिबा आंका पाखर ताको हो जे एम्बिग्यूटी बोली धर तमरा एठी पांच जन पिला अछ समस्तकर सेम नेम थियो मु जण को ना डाकीबी त पांच जन क्या हो ब दी जन क्या हो सेटा को जे नेम एम्बिग्यूटी बोली तो सेटा को चेंजेस कराबो ओके तो से समय जेमती एबे आमे कोन कहते ना आमे कहते ना काली योजना खराब बलिया योजना खराब से लक्ष्मी योजना खराब देला कि से समय भल थिला
ତ କେତେ ଯୋଜନା ସବୁ ଅଛି କିଛି ଜିନିଷ ତାକୁ ଆମେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରୁଛେ କିଛି ଜିନିଷକୁ ଆମେ ଡିନାଇ କରୁଛେ ଜିନିଷ ରହିବା ଦରକାର ନାହିଁ ସେଟା କ୍ରିଟିସିଜିମ୍ ଆଡକୁ ଯାଉଛି ବୁଝିହେଲା ତ ସେମିତି ଫ୍ରିଡିଆନ୍ ଯେତେବେଳେ କହିଥିଲେ ତାଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ଏଇଟା ଆକ୍ସେପ୍ଟେଡ ଥିଲା କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ନ୍ୟୁ ରିସର୍ଚ୍ଚ ଆସିଲା ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କୁ କ୍ରିଟିସିଜିମ୍ କୁ ଆସେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ କ୍ରିଟିସାଇଜ କରାଗଲା ବଟ୍ ଆଟ୍ ଲାଷ୍ଟ କୁହାଗଲା ଯେ ଫ୍ରିଡିଆନ୍ ଯୋଉ ଥିଓରି ଦେଇଥିଲେ ସେ ଥିଓରି ଗୋଟେ ବେସ୍ ବନେଇଲା ଯେ ଆଉ ଗୋଟେ ଥିଓରି ଆସିବ ତ ସେଇ ଯୋଉ ସବୁ ସମସ୍ତେ କଣ କଲେ ଏବେ ପର୍ସନାଲିଟି ଗୋଟେ ଲୋକର ଡେଭଲପ କରିବା ପାଇଁ ସେ ସୋସିଆଲିଜିମ୍ କୁ ଦାୟିତ୍ୱ ଦେଲେ ଯେ ସୋସାଇଟିରେ ଯେମିତି ଆମେ ଚଳିବା ସେଇ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ପିଲାର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହବ ପର୍ସନାଲିଟି ବଢିବ there is no denial of the fact that psychodynamic theory has its root from Freudian psychoanalysis, even if Neo-Freudian disagree with the Freud on many issues, shifted their focus from the biological domain to the social and cultural concern. Till then, each and every new concept developed in the post-Freudian era definitely adds something substantial to the field of testing, research, method used in the subsequent theory focused on the behavioral approach. The first ସେମାନେ define କଲେ behavioral approach କେମିତି ଆସିବ this approach is somewhat different than the psychodynamic approach this approach holds the view of the behavior is the product of stimulus response interaction learning takes place through the series of stimuli response connection they believe that external reinforcement directly influence the process of learning and helps in making easy SR connection. Hence, according to the behaviorist, the individual behavior is determined to the great extent by the external condition and factor rather than the internal factor affecting the behavior. The behavioral approach से कहले गोटे लोकर लर्निंग प्रोसेस ता कहा ऊपर डिपेंड करिवो ना से गोटे दिसले ना ताकर हेनी मंडे दिन तक रखी काली गोटे अछि आगे ओके देखो this approach somewhat different from the psychodynamic approach this approach holds the view of the behavior is the product of stimuli response interaction and learning takes place through the series of stimuli response connection this belief that external reinforcement directly influence the process of learning external reinforcement अर्थ होती कौन आमे जेतेबेला पाठ पढिबा हम पाखरे जदि घंटी मृदंग बाजियो सब तो हम पाठ पढाटा पूरा अधिकार किंबा जदि देखो आमे तो परीक्षा थिवो मुझे गीत गोटे लगे देवी तो ऑटोमेटिक गोड़टा नाचिया चेष्टा करी बुझी होची जेतेबेला पाठ पढा थिवो मु समस्त स्ट्रीट भी कहि पाठ पढ तमरो मन होतो गीतरे नाचिया पे तमे भी बाध्य हेकि पढिबो तेणु एटा होची कोन एक्सटर्नल इन्फ्लुएंसिंग केमति रहला तम पाठ पढिया पे तो लर्निंग प्रोसेस एइ रिएक्ट करे आ गोटे स्टिमुली मतलब हम जो हार्मोन ई सब कहबा तम कहि तो खाली पिकनिक अछि हैला ता पूर्व दिन मुझे परीक्षा अछि हैला तमे जेते पढिले कि जेते मुंडा पिकनिक पर दिन आसे परीक्षा हो से टोटली माइंड रे किछि बसिबो केन ता पूर्व दिन कोन थियो ड्रेस पैकिंग हैला केमति पिंडी कि जेबी केमति नाचिबी कोन थियो सेटा मन रे बोल देबो स्टेट कहबो साइकोलॉजी रे एग्जाम से साइकोलॉजी बाटर थियो तम तो माइंड